Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Dr. Jahangir, and I'm going to discuss the July papers SK10. This is the third paper. The digoxin toxicity is increased with, the answer is hyperkalemia. I already discussed in detail in my previous lecture that digoxin uses the sodium potassium ATPase. Sodium potassium ATPase. While this is also used by potassium, so potassium enters into the cell through this pump, while the digoxin also enters through this pump. Now if there are more potassium bound to the receptors, so there will be less digoxin binding to the receptors. So hyperkalemia, it actually decreases digoxin toxicity. Hyperkalemia, it decreases digoxin toxicity, but digoxin toxicity causes hypokalemia. How? Because if there are more digoxin binding to this channel, then it means there is less space, less receptor available for potassium, so potassium cannot enter into the cell, so there will be hyperkalemia. So coming back to the question, digoxin toxicity increases with hypokalemia. The answer is hypokalemia. The answer is hypokalemia. Digoxin toxicity causes what? Then the answer is hyperkalemia. Hyperkalemia. Use of captopril. Captopril causes hyperkalemia. So that is not the answer. Digoxin toxicity will be increased when more digoxin can bound to the receptor, and more digoxin can bound to the receptor in case of hypokalemia, when you are having less number of potassium. So if this is your cell, then the sodium potassium ATPase is blocked by digoxin. What happens? Sodium is retained inside. Now sodium has to come out, so there is another channel. Sodium comes out and the calcium comes in. That is called sodium calcium transporter. This is another MCQ that comes again and again, how the calcium enters. So it exchanges with the sodium. Now we are having more calcium inside the cell. So when we are having more calcium inside the cell, it causes contraction of the cardiac muscles and causing increase in the cardiac output in stroke volume. So coming next, voluntary inhibition of maturation is by, now they are talking about the voluntary. Voluntary is pudendal nerve. The pudendal nerve is controlling your sphincter, the external urethral sphincter, and you can voluntarily control it. Patient having resting tremors, rigidity, and expressionless face. So the resting tremor, if only mentioned, then this is Parkinson. If intention tremor, then this is cerebellar disease. If postural tremor, then benign essential tremor, physiological tremor, these should be kept in mind. Over here it is Parkinson, and in Parkinson you are having decreased dopamine, and the dopaminergic neuron that comes into the basal ganglia, the neurons comes from the substantia nigra, and if the substantia nigra is missing in the MCQs, then look in the options, look for the midbrain, because these are MCQs that are repeating with options. So coming next, during lactation, prolactin causes inhibition of what? There is another MCQ. During pregnancy, lactation is inhibited, and during lactation, pregnancy is inhibited. Don't confuse both these MCQs. During lactation, prolactin causes inhibition of GnRH. When your prolactin goes up, it will inhibit the GnRH, and that will inhibit low FSH and LH. If the question says during pregnancy, there is no lactation. In pregnancy, there is no lactation. Why? Because the estrogen and progesterone, they both do not allow the prolactin to act on the stomach, on the breast, to eject the milk. So this is really combined effect. During pregnancy, there is no lactation due to the combined effect of estrogen and progesterone. During lactation, there is no pregnancy. Why? Because there is no ovulation. Why there is no ovulation? Because during pregnancy, you are having
decrease GnRH. So during lactation, there is no pregnancy. During lactation, there is no pregnancy because there is decreased GnRH. If the option is having prolactin, what is the best option? And again, you are having GnRH, decrease in GnRH. When the baby is sucking the nipple, the reflexes goes toward the brain directly to inhibit the GnRH. And when there is no decreased GnRH, there will be decreased FSH, and there will be decreased LH, and there will be decreased estrogen and progesterone, and there will be decreased ovulation. When there is no ovulation, so there will be no pregnancy. So during lactation, no ovulation or no pregnancy because of decreased GnRH. If that is not an option, then look for the word increase prolactin. But if the stem is having this during lactation, and the stem is like this during lactation, ovulation is inhibited. During lactation, ovulation is inhibited due to decrease in which of the following hormone. This is your stem. Then you have to pick GnRH. You have to pick the GnRH. If your stem is like this during lactation, ovulation is inhibited. It is due to increase of which of the following hormone. Now you are having used the word increase, then choose the word prolactin. 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 I think it is clear. If there is no increase or decrease, you choose the GnRH. If there is no GnRH, choose the prolactin. If there is increase or decrease, if there is the word decrease in the stem, choose the GnRH. If there is increase word in stem, choose the prolactin. And during pregnancy, lactation is inhibited by both estrogen plus progesterone. If both is not available, then choose the progesterone. Reference is the first aid. First aid is the reference. Follow the first aid. But it is actually the BRSMCQ, and the BRSMCQ is the CPSP people are doing what they are doing, copy paste. So there is a high possibility that there will be both option will be present, because this is the MCQ from BRS, and the BRS it is clearly mentioned both option, estrogen and progesterone. Parietal cell secretes HCl plus intrinsic factor. Needle penetration in the left port intercostal space will first pierce what? Well, I have uploaded a full video on the interior intercostal membrane or the external intercostal membrane. The posterior intercostal membrane or the internal intercostal membrane. When to choose muscle, when to choose membrane, when to choose the atrium. Over here, the answer is intercostal membrane. Intercostal membrane. It is not like third space, fourth space, fifth space. Well, there is the people are utilizing it. If there is a fourth space, then membrane a fifth space, then the muscle in sixth space, and then no, this is not like this. I have uploaded with diagrams, with explanation, with reference from the Grays and the Snells both. If this is your sternum on the side, from the sternum to the midclavicular line, you are having external membrane. So if it is third space, fourth space, fifth space, that will be external intercostal membrane. So better to watch that video. Most common cause of autoimmune hemolytic anemia is, this is idiopathic. But if the question says most common cause of secondary autoimmune hemolytic anemia, then SLE. If the question says most common cause of autoimmune hemolytic anemia, the answer is idiopathic. If the question says most common cause of primary autoimmune hemolytic anemia, the answer is idiopathic. If the question says it is only the secondary autoimmune hemolytic anemia, in which the answer is SLE. Otherwise, it is idiopathic. Which amino acid is the major contributor to the transport of nitrogen destined for excretion is urea? Then the answer over here is glutamine. It is actually glutamate, which takes amino group and it becomes glutamine. Then it comes toward the liver. Inside the liver, it is again the amino group is taken by the liver, and that amino group is converted into urea. So it is a major carrier. It is a major carrier. And if the question says this is actually glutamine cycle, well, from the muscle, if the question says which amino acid is the transporter of nitrogen from the muscle, then the answer is alanine. From most of the tissues, it is glutamine.
except the muscle. From the muscle, it is alanine. It is alanine. It is alanine. In which enzyme is used? The answer is ALT. This is alanine aminotransferase. Alanine is used. Satiety center is in the medial part of the hypothalamus. This is actually ventromedial part of the hypothalamus. Lateral is associated with the hunger, and I explained in the detail a video on it. All of the nuclei, you have to make the photographic memory to keep the things last longing in your brain. So you must watch these videos. There is separate video on my on thalamus and separate video on hypothalamus, their nuclei, and when they are damaged, what manifestation the person will have. You can watch that video so that you can remember this lifelong. A tumor of 3.5 centimeter in size, if lateral lymph nodes are positive and there are signs of mets, what will be the TNM classification? Now for T less than 2, then 2 to 5, and 5 are more than 5 centimeter. That is T1, T2, T3. Now you can easily say this is T2. This is T2, but there are distant mets. This is M1. If there is distant mets, M1. If no mets, then this is M0. So look for T2, M1. First one is out. Look for T2, M1. But what for N1? Now there is another classification for nodes N1, N2, and N3. But you look for N2 and M1, T2 and M1. So we are left with two options. T2 are only in 2. T2 are only, this is not T1. So we are having T2. So apply the exclusion criteria. T2, but M1 was here. So this is the right option. Why not that is the right option? Because that is M2. M2 means nothing. There is no word like M2. There is no word like M2. And then if there is no nodal involvement, then this is in not. If there are ipsilateral lymph nodes involvement but axillary, then that is N1. Infraclavicular lymph nodes and enlargement, then that is N2. But there are no infraclavicular lymph nodes enlargement. So this is N1. So choose the option B. Cytokeratin, the type of this is intermediate filament, that is the right answer. Cell to cell adhesion, that is cadherin, and there is MCQ that in carcinomas we are having mets due to a loss of. The answer is cadherin. In carcinoma there is mets due to a loss of. If there are two cells, they are bound together by cadherin. If that is destroyed, then this is mobile. The cell is mobile. Contraction of diaphragm will cause what? If your diaphragm is contracting, it increase the lung volume, but which diameter is it increasing? The answer is vertical diameter. It increasing the vertical diameter. It increases the vertical diameter. Prolactinoma in female is due to decrease dopamine from hypothalamus. Normally, the dopamine inhibits the prolactin. If there is decreased dopamine, there will be increased prolactin. Which of the following is pain mediator? The answer is bradykinin. Yes. Immediate mediator histamine. This is bilkul the right sequence. Delayed mediator leukotrienes. Fever mediator interleukin 1 and TNF alpha. But if there is a bacterial infection, then choose interleukin 1, and if there is a viral infection, choose the TNF alpha, because the CPSP will always make you confuse. A pain mediator bradykinin and prostaglandin E. Prostaglandin E. Factor 9 deficiency treated with FFPs. But FFPs does not have factor 8. So if there is a factor 8 deficiency, the ideal way is replace with factor 8. But if that is not in the option, then choose cryoprecipitate. Choose the, because that has factor 8 and fibrinogen. But if there is factor 8 deficiency or von Willebrand disease and there is a mild bleeding, the answer is desmopressin. Because they release factor 8 from the endothelial cells. Or there is von Willebrand disease and there is a mild bleeding, the answer is what? If there is a mild bleeding, give desmopressin. What is the function of von Willebrand factor? The von Willebrand factor is the main function is it stabilizes the factor 8. Let's suppose this is factor 8. So the von Willebrand factor
protects it from degradation. The one valveulin actually protects it from the degradation. So if you are having valveulin disease, there will be no protection. If there is no protection, what will happen? It is easily destroyed. So the half-life of the factor 8 is reduced. So if the half-life of factor 8 is reduced, what happens? You are having factor 8 deficiency. And you are having factor 8 deficiency, there will be increased APTT and there will be bleeding. What is the best initial test? The answer is APTT. What is the confirmatory test? The answer is factor 8. The answer is factor 8. The answer is factor 8. If there is a mild bleeding, the answer is desmopressin. If there is a significant bleeding, the answer is factor 8. If there is no word factor 8, the answer is cryoprecipitate. For factor 9, if there is a mild bleeding, the answer is Fcps. If there is severe bleeding, the answer is factor 9. So these are the MCQs that come again and again. If there is the word tissue trauma, what will you choose? In tissue trauma, you will choose factor 3, tissue thromboplastin. That is the main thing. In blood trauma means when the blood comes in contact with a non-endothelial surface such as the collagen, then there is factor 12 activation. The first factor to be activated is factor 12. First step in the thrombus formation is deposition of platelet and endothelium. That is the right answer, deposition of platelet and endothelium. First step is the platelet adhesion, second is platelet aggregation. Platelet adhesion means if there is your damaged endothelium, the platelet attaches to the collagen, to the non-endothelial surface. This is called platelet adhesion. The platelet aggregation means platelets, they combine with one another. When platelets join with another platelet, this is aggregation. When the platelet joins with another surface that is non-platelet, then this is platelet adhesion. So there is a difference between the two. Adhesion means it is attaching with a non-platelet surface, such as the damaged endothelium, such as the collagen. But if the platelets are attaching with one another, then this is called platelet aggregation. So platelet adhesion. So first there will be adhesion followed by aggregation. A young male presented with unequal BP reading in both the arms on examination, visible intercostal pulsation, and X-ray shows notching of the rib. What is the diagnosis? Is it preductal or postductal? So there is a concept behind that. Usually, if this is your aorta and this is pulmonary trunk, so there are three branches from here. Subclavian artery. This is the main thing. Subclavian artery. We are concerned more with the left subclavian artery. And this is that connection. That is the bit. So if that is the pulmonary trunk, so that is the left side, that is the right side. So this is actually that connection. Truncus arteriosus. Connection between the left pulmonary artery and the aorta. So after birth, this usually regress and this is replaced by ligamentum arteriosum. But what happens? Some of the tissue from here it transports toward the aorta, and while changing from muscular to the ligamental structure, what happens? The transported tissue into the aorta that also constrict and causing constriction of aorta. So if that constriction of aorta does not involve the subclavian vein, and that is distal to subclavian vein, so we are having BP in the right arm is equal to BP in the left arm. But what happened? There is decreased blood flow to the both the limbs. So there is decreased blood flow to the kidney, and the kidney presume that the body is in hypovolumic state. So the kidney releases renin and activates renin-angiotensin system and retains water and normalizes BP in the lower limb. But what happens in the upper limb? In the upper limb, your BP goes up because of more volume retention. The kidney is trying to regulate its flow. Now the kidney has maintained its flow by absorbing more water, and it has normalized BP in the lower limb. But while doing so,
it has increased the BP in both the upper limb because there is more volume in these circulation. So there is increased BP in bilateral upper limb, and there is decreased BP or normal BP in bilateral lower limb. So there is radiofemoral delay, not radial delay. Now, unfortunately, if if the this is actually co-occasion of aorta. So we are having three classification of this. One is the preductal if it occurs proximal to the ductus arteriosus. One other is the juxtaductal if it occurs at the level or ductal, and then is the postductal if it occurs beyond the ductus arteriosus. So when it occurs preductal, it also involves the subclavian. When it involves the subclavian, the blood flow to the subclavian, to the left subclavian artery is also reduced. If that is reduced, so it will now acts like the lower limb. It will gets more blood flow until the BP in this is normalized, because there is increased blood volume and the body is trying to normalize the blood volume. So what happened in the left arm, you are having more BP. So if there is a radial delay, then this is preductal. If there is a radiofemoral delay, then this is postductal. Simple answer over here is preductal. Conduction system of the heart is in. So we are having the SA node, AV node, and conducting system. We have to understand this. If this is the heart, and we have taken out the section from it. Now let's discuss the microscopic anatomy of it. We are having fibrous pericardium. This is the first layer. Then the second layer is serous pericardium. So the serous pericardium is split into two. This is the serous pericardium. So we are having the fibrous pericardium, that is the single layer, fibrous pericardium. Then we are having this one is the serous pericardium, but this is the parietal layer of the serous pericardium, and that is the visceral layer of the serous pericardium. Then the visceral layer of the serous pericardium is the visceral layer of the serous pericardium and the parietal layer of the serous pericardium. So we are having the three layers, the pericardium, the myocardium, and the endocardium. We are having three layers: pericardium, myocardium, and endocardium. So the pericardium, we are discussing this structure. We are now in the pericardium. So of this layer of the this is which layer? Visceral layer of the serous pericardium. This is also known as epicardium. Now if you understand this, then it is very easy for you. Epicardium, because they will confuse you in the MCQs. They will always confuse you regarding the epicardium, because its blood supply is different, its nerve supply is different. So the epicardium, this is also known as the epicardium. So the SA node lies in the subepicardium. So the SA node lies over here. This is the fibrous pericardium. It has got two layers, fibrous, and this is the pericardium. It has got two layers. Outer is the fibrous, the inner is the serous. So the SA node lies over here, subendocardium. Now coming down deep, I'm giving you a concept because there is another MCQ I'm going to quote after the explaining this. तो आपके कितने लेयर्स हो गए? 3 लेयर्स है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. अब पेरिकार्डियम जो है उसको अगर आप ले लो तो उसमें दो टाइप्स है, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया, एक सेरस पेरिकार्डियम हो गया. सेरस पेरिकार्डियम अगेन दो में डिवाइड है, पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम. और विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम बोलते हैं. और इसके नीचे आपका कौन सा पड़ा है? इसे नोट पड़ा है, सब एपिकार्डियम. ये एपिकार्डियम है, इसके नीचे आपका कौन सा पड़ा है? इसे नोड आपका पड़ा है. अब आते हैं
एवी नोड की तरफ। एवी नोड किधर पड़ा है? वो एंडोकार्डियम में पड़ा है। ये बस सिंपल हो गया, ये आपका मायोकार्डियम हो गया, ये एंडोकार्डियम हो गया। तो आपका जो एवी नोड है वो किधर पड़ा है? वो एंडोकार्डियम में आपका एवी नोड हो गया, एंडोकार्डियम में आपका एवी नोड हो गया। अब जो नेक्स्ट जो कंडक्शन सिस्टम है वो कहाँ पे है? वो सब एंडोकार्डियम है। ये एंडोकार्डियम है, इसके बिल्कुल नीचे पड़ा है, यहाँ पे सब एंडोकार्डियम में, सब एंडोकार्डियम। तो आपका एस नोड हो गया, एवी नोड हो गया, और आपका कंडक्शन सिस्टम हो गया। ये आपकी लोकेशन हो गई। ये फोटोग्राफिक मेमोरी अगर आप दिमाग में रखेंगे कि मेरा एस नोड किधर है, वो एस नोड जो है वो सब एपिकार्डियम में है, मेरा एवी नोड किधर है? वो एंडोकार्डियम में है, और मेरा कंडक्शन सिस्टम किधर है? वो सब एंडोकार्डियम में है। तो आपके 3 एमसीक्यूज ये हो गए। एक अनदर एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज क्लोजेस्ट टू द पेरिकार्डियम। तो इन 3 स्ट्रक्चरों में, सॉरी, तो इन तीन स्ट्रक्चरों में विच इज क्लोजेस्ट टू द एपिकार्डियम। सो यू आर हैविंग द पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सो पेरिकार्डियम में आपका सब एपिकार्डियम में आपका यहाँ पे एसे नोड था, एंडोकार्डियम में आपका एवी नोड था, और सब एंडोकार्डियम में आपका कंडक्शन सिस्टम था। सो यहाँ पे आपका सरफेस ऑफ द चेस्ट है बाहर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द चेस्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द पेरिकार्डियम? द आंसर इज एसे नोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार अवे, कौन सा जो है सबसे दूर है फ्रॉम द पेरिकार्डियम या सरफेस ऑफ द चेस्ट? द आंसर इज ये वाला कौन सा था? कंडक्शन सिस्टम, कंडक्शन सिस्टम। अगर और एक और एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द ब्लड, तो ब्लड के करीब कौन सा है? ये वाला। ये कौन सा था? कंडक्शन सिस्टम। और ब्लड से दूर कौन सा है? ब्लड इन द वेंट्रिकल, ये वाला। तो आपके ऑलमोस्ट 6 to 7 एमसीक्यूज इस हिसाब से कवर हो गए, प्लस आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बन गई। इंशाल्लाह आप नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑफ द जीआईटी इज, तो यहाँ पे आपकी स्टमक की जो है वो, यहाँ पे जब ये खुल जाता है तो यहाँ रिसेप्टिव रिलैक्सेशन होती है। ये फंडस जो है वो डायलेट होता है टू अकोमोडेट द फूड, टू अकोमोडेट द फूड, तो रिलैक्सेशन। डीवीटी एम्बोलाई लॉज इन, तो फर्स्ट गोज कहाँ होगी? पहले कहाँ जाती है? आईवीसी में जाती है। और लॉज कहाँ होगी? कहाँ ये अटकेगी? पल्मोनरी आर्टरी में ये अटकेगी। सिस्टमिक आर्टरी एम्बोलाई आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये यूजुअली कहाँ से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन सिस्टमिक आर्टीरियल एम्बोलाई ड्यू टू माइट्रल स्टेनोसिस अराइज फ्रॉम, द आंसर इज लेफ्ट एट्रियम। इस पे बस फोकस करना है। ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, यूजुअली लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका स्टेनोस हो गया, यहाँ पे स्टेसिस होगी, तो क्लॉट यहाँ से एट्रियम से निकलेगी। इन अ यंग गर्ल रेस स्टार्टेड बिहाइंड द एयर्स, तो बिहाइंड द एयर से स्टार्ट हुई, पहल गई तो मीजल्स हो गया। इसलिए B27 इज एसोसिएटेड विद, तो अगर क्वेश्चन में एक्सेप्ट हो तो एक्सेप्ट ऑप्शन को देखना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए जो इन्होंने दिए। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंट्रोपैथी। इसका मैंने फार्मूला बताया था, पेयर, PAIR। तो पी जो है वो सोरियाटिक हो गया, एनकाइलोजिंग हो गया, आई इन्फ्लेमेटरी हो गई, आर जो है वो रिएक्टिव आर्थराइटिस हो गया। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं, इसको रिएक्टिव आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है। 100 सेंटीमीटर इलियल रिसेक्शन फॉलोइंग विल अकर, तो या तो ये इसके स्टेम में गड़बड़ है, या इसमें एक्सेप्ट है, या पता नहीं इसमें क्या है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है वो आ सकते हैं। लेकिन किसी ने उधर शेयर की थी फेसबुक ग्रुप में, उसमें की जो है उन्होंने MCQs काफ़ी पेस्ट की थी यूएसमिली से, यूएसमिली के ग्रुप में। तो उसमें आंसर जो था वो इंक्रीज वाटर एंड साल्ट कंटेंट ऑफ द स्टूल था, इंक्रीज वाटर एंड साल्ट कंटेंट ऑफ द स्टूल था। और उसमें जो है वो स्टियोटोरिया का रीज़न दिया था कि वो फैट्स एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो उसमें साल्ट एंड वाटर एब्जॉर्ब नहीं होते, तो वो स्टियोटोरिया हो जाता है और वाटर कंटेंट जो है वो बढ़ जाती है। इतना मुझे याद है कि इलियल रिसेक्शन में जो है आपका इंक्रीज साल्ट एंड वाटर कंटेंट ऑफ द स्टूल या डिक्रीज साल्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन होती है। बेस्ट वे टू मेजर GFR वो क्रेटिनिन क्लियरेंस है, लेकिन क्लिनिकली आपका क्रेटिनिन क्लियरेंस है। GFR इज मेजर्ड बाई, तो आपका फिर एंडोरिन आएगा, मेजर्ड बाई। GFR इज एस्टिमेटेड बाई, एस्टिमेट का मतलब है अंदाज़ा लगाना, तो अंदाज़ा तो क्रेटिनिन क्लियरेंस से लगाया जाता है, एंडोरिन तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको देगी। क्लिनिकली क्लियरेंस। साइटोकेराटिन इज यूज्ड फॉर इंटरमीडिएट
फिलामेंट्स। और साइटोकेराटिन पर्ल्स किस में होते हैं? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में कौन से इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं? तो साइटोकेराटिन, क्योंकि उसमें केराटिन पर्ल्स होता है। इंटीरियर रिलेशन ऑफ राइट किडनी, तो इसमें लेवर है, और अगर हाइलम ऑफ द राइट किडनी पूछे तो इंटीरियर रिलेशन देन इट्स सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम। बिल्कुल सही है, इसको इसी तरह याद रखें। ट्राइसोमी 21 इज डाउन सिंड्रोम, ई फॉर 18, EIGHT, तो एडवर्ड 18 हो गया, पटाओ 13। एन्यूप्लाइडी इज काज बाई वेरिएशन इन नंबर विद नॉन डिस्जंक्शन। तो एन्यूप्लाइडी और ईयूप्लाइडी को जो उन्होंने जो मेंशन किया है वो डिफरेंस वो ये है कि एन्यूप्लाइडी में आपका अदर देन मल्टीपल होगा। अदर देन मल्टीपल ये है कि आपका 23 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी? 46। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी? 3 3 9, 3 दूनी 6। तो ये मल्टीपल नहीं होगी, एन्यूप्लाइडी में एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होगी, इसमें कम या ज़्यादा होगी, बल्कि इसमें आपका 46 बनता है तो इसमें या 47 होगी या 45 होगी या 44 होगी या 48 होगी, इस तरह होगी, एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होगी। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। फिजिक्स में हम इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। और ईयूप्लाइडी अगर आ गया तो ईयूप्लाइडी का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 23 होगा, N2 N3 N4 N। मैच्योरेशन सेंटर इज लोकेटेड, तो यहाँ पे एक गलती हुई है, ये सेंटर का पूछ रहे हैं तो सेंटर जो है वो ऊपर जो है वो पोन्स और मिड ब्रेन में है। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स सेंटर अगर पूछे तो फिर सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। मैच्योरेशन सेंटर अगर सिर्फ पूछे तो फिर ऊपर है, ये पोन्स में या मिड ब्रेन में, तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा, दोनों नहीं दिए होंगे। और अगर दोनों दिए होंगे तो उसमें स्टेम में फिर मसला होगा, उसमें स्टेम में आपसे पूछा होगा कि एक्साइटेटरी सेंटर और इनहिबिटरी सेंटर। तो इनहिबिटरी सेंटर मिड ब्रेन है और एक्साइटेटरी सेंटर पोन्स में है, एक्साइटेटरी सेंटर उसके पोन्स में है। और इस तरह गाइटन में भी इसी तरह ही वो रेफरेंस दी है। और मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इज सेल्फ रीजनरेटिव, ये जो है सेल्फ रीजनरेटिव है। इट इज़ कंप्लीटेड और इट इज़ कैरिड आउट इन मैच्योरेशन मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इज कैरिड आउट इन सेक्रल स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि ये स्पाइनल कार्ड के थ्रू ये आर्क बनाता है। रिफ्लेक्स हटा दो तो ऊपर जाओ फिर। A patient with meningitis organism with halo was found in CSF cryptococcus, तो एम्पोटेरासिन बी, या इसके साथ थिक कैप्सुलेटेड कैप्सूल वाला आता है कि ऑर्गेनिज्म है उसका थिक कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है और मेनिंजाइटिस के साथ आया है। और अगर थिक कैप्सुलेटेड कैप्सूल भी दिया हो और HIV वाला पेशेंट हो तो उसमें भी आपने ये क्रिप्टोकोकस पिक करना है। ब्रांच ऑफ सप्लीमेंट आर्टरी विच टेक्स पार्ट इन द शोल्डर जॉइंट एनास्टोमोसिस, तो ये डॉर्सल स्किपुलर आर्टरी है। ये इन्होंने एक बुक है MCQs की एनाटमी के उससे ली है और डायरेक्ट उसमें की जो है वो डॉर्सल स्किपुलर आर्टरी है। अप्रोप्रिएट ड्रग टू ट्रीट सूडोमोनास कोलाइटिस इस, तो इसमें मेट्रोनिडाजोल होगा, अगर वो नहीं है तो उसके बाद वेनकोमाइसिन है। और याद रखिए इट इज़ नॉट IV वेनकोमाइसिन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने तो की रिकॉल की है लेकिन हमने IV और ओरल को नहीं देखा है। सूडोमोनास कोलाइटिस में ओरल वेनकोमाइसिन काम करती है, नॉट IV, क्योंकि IV वाला गट में नहीं जाती, ओरल में जाती है। और सिस्टमिक इन्फेक्शन में ओरल वेनकोमाइसिन कभी काम नहीं करती क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होती, ये गट से ए सच निकलती हैं, तो इस पर फोकस करना है। मेट्रोनिडाजोल अगर वेनकोमाइसिन दोनों दिए हों तो वेनकोमाइसिन के साथ ज़रूर दिया होगा कि ये IV हो, तो IV उसमें काम नहीं करती, ये ओरल वेनकोमाइसिन है, तो इस पर गौर करनी है। अगर मेट्रोनिडाजोल को रिस्पांस नहीं है तो हम वेनकोमाइसिन की तरफ फिर जाते हैं। पहले क्या मेट्रोनिडाजोल है। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाई, तो यहाँ देखे रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स सेक्रल सेगमेंट, सेक्रल और द फॉलोइंग स्प्रेड थ्रू फीको ओरल रूट, तो हेपेटाइटिस ए दोनों एस्प्रिन और डोज काजेज। तो एस्प्रिन जो है वो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन टिनाइटिस, नाजिया, वोमिटिंग, ये तीनों करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली टिनाइटिस, एक और MCQ है इसमें टिनाइटिस नहीं है तो इसमें नाजिया एंड वोमिटिंग है, ये चूज़ करना है अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन में। तो पहले टिनाइटिस करता है, फिर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस करता है, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर कोमा, फिर डेथ करता है। तो एस्प्रिन ओवरडोज जो है वो एसिडोसिस भी करता है, अल्कलोसिस भी करता है और टिनाइटिस तीनों करता है, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि उन्होंने अर्लीस्ट नहीं पूछा ना, अर्लीस्ट में फिर जो है फिर यही चीज़ें होगी, बस ये याद रखें। इन नंबर 8 और यहाँ पे ये लोग ABGs देते हैं जो कंफ्यूजिंग ABGs जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है वो ये आपको ये देंगे कि आपको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस दी होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस दी होगी और पूछेंगे कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, तो ये मिक्स्ड एसिडोसिस विद अल्कलोसिस।
मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी एल नंबर ईटन सिंड्रोम बार बार डिस्कस हो चुका है कैल्शियम चैनल के खिलाफ, लेकिन प्री साइनेप्टिक इस पर फोकस करना है। प्री साइनेप्टिक राइट इंटरकोस्टल ब्रोंकियल आर्टरी अराइज फ्रॉम द इंटीरियर पोर्शन ऑफ डिसेंडिंग आर्टरी। तो डिसेंडिंग आर्टरी से ब्रेकियल आर्टरी और इंटरकोस्टल आर्टरी दोनों एज अ सिंगल ट्रंक निकलता है, राइट इंटरकोस्टल ब्रेकियल आर्टरी। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज, तो बिल्कुल सही है, आप सर्च भी कर सकते हैं नेट पे, 10 to 35%, 10 to 35%, 0.8 ग्राम पर केजी है। कैल्शियम इज रिलीज्ड बाय द ट्यूमर ऑफ विच ऑर्गन, तो यहाँ इस पे फोकस करें। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं इज रिलीज्ड बाय द ट्यूमर ऑफ विच ऑर्गन। मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड में आपका कैल्शिटोनिन बढ़ जाता है, तो वो तो डिपॉजिट करता है बोन्स में, वो ज़्यादा फॉलोइंग डिपॉजिट द कैल्शियम, तो फिर मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड है। यहाँ पे पूछ रहे हैं रिलीज्ड, तो पैराथायराइड क्या करता है, वो रिलीज़ करता है। तो इसका जो एडिनोमा है या इसका जो कार्सिनोमा है वो क्या करेगा, वो बोन से रिलीज़ करेगा, बोन से रिलीज़ करेगा। अगर डिपॉजिट का वर्ड आ जाए तो फिर मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड। और एक और एमसीक्यू है, अ पर्सन इज हैविंग हाइपरटेंशन फॉर 14 years एंड हाई पीटीएच, द आंसर इज, तो उसमें सीकेडी है, तो उसमें सीकेडी है। 14 years से हाइपरटेंशन अभी पीटीएच रेस्ट है, तो उसमें हाई सीकेडी है, सीकेडी। एक्यूट किडनी इंजरी में आपका पीटीएच नहीं बढ़ता, इट इज़ ओनली द क्रोनिक किडनी डिजीज इन विच पीटीएच इज इंक्रीज, ये याद रखें। एक्यूट किडनी इंजरी में आपका पीटीएच इंक्रीज नहीं होगा, एक्यूट किडनी इंजरी में आपका पीटीएच इंक्रीज नहीं होगा, एक्यूट किडनी इंजरी में आपका पीटीएच इंक्रीज नहीं होगा, एक्यूट किडनी इंजरी में आपका पीटीएच इंक्रीज नहीं होगा।